आज पवित्र लाइब्रेरियंस दिवस उत्सव को मु नसीमा बेगम ओएलए एग्जीक्यूटिव मेंबर आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज दिनटी आम समस्त बहुत गुरुत्व। आज आमे आमर पुस्तकालय परिचालक और कर्मचारी मानक सम्मान जनाऊँ। यही दिवसटी डॉक्टर एसआर रंगनाथन जन्मवार्षिकी अवसर में पालन करा जाई अछि, जी भारतीय पुस्तकालय विज्ञान जनक भाव में परिचित। Good morning everyone. This is Mitali Sahu, life member OLA. I welcome you all on this special occasion of National Librarians Day. Today we have gathered here to celebrate the invaluable contributions of librarians and to commemorate the librarians on this 134th birth anniversary of Dr. S.R. Ranganathan, the father of library science in India. ज्ञान के मंदिर, पुस्तकों के रक्षक लाइब्रेरियन दिवस पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ग्रंथालय हेउची ज्ञानर एक जीवंत मंदिर, जेउठारे अतीत और वर्तमान और भविष्यत हाथ मेलांती। आम सहित ए कार्यक्रम रे जोग देबा पई आम मुख्य अतिथि श्री काली प्रसन्न महापात्र सर, ऑनरेबल आईएएस, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ओडिशा एवं सम्मानित अतिथि प्रोफेसर मानसी गोस्वामी, प्रिंसिपल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर उपस्थित अछंती। मु सेमाने समस्तंकु स्वागत जणाउची एवं अन्यान्य अतिथि वृंदंकु मध्य मु स्वागत जणाउची। I welcome all the dignitaries, Shri Kali Prasanna Mahapatra sir, Professor Manasi Goswami madam, Dr. Vibhuti Bhushan Sahu sir, Dr. Banambara Sahu sir, Shri Vijay Ketan Ponda sir, and Dr. Pushpalata Negi madam to come up on the dais and please take your seats. आम पुस्तकालय उन्नति पई आपण मानकर अवदान अतुलनीय। Let's begin the auspicious occasion with the traditional lamp lighting ceremony, a tribute to Dr. S.R. Ranganathan as the father of library science. Now I request all the dignitaries to come forward for lighting the lamp and floral tribute to S.R. Ranganathan on his 134th birth anniversary. शुभं कुरुध्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुध्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुध्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुध्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः
I request to offer the flower bouquet to our dignitaries. A huge round of applause. Kindly ସମସ୍ତେ ଟିକେ କରତାଳି ଦେଇକି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। A huge round of applause, please. So, library is a place vibrating with ideas. I would like to invite Sri Bijay Ketan Ponda sir, Secretary, Odisha Library Academy, to deliver his welcome address. Thank you. Good morning, all of you. Good morning, all of you. Let's charge ourselves for this day. Respected Chief Guest, Kali Person Sir, Guest of Honor Madam Goswami Madam, our President Dr. Vibhuti Bhushan Sahu, our former President and keynote speaker Dr. Banambar Sahu, and Madam Pushpalata from this institution. Let me tell you this thing that this is our distinguished library professionals from all over Odisha, and all the participants, few colleagues and media, digital media and print media. All of you, we are gathered together, and dear colleagues and friends, let me welcome you all for this August gathering for our 11th national 11th annual day of Odisha Library Academy and convention on the topic RIEOLA. As you know, this topic is we are celebrating our national day, as well as this we have a seminar today, and there are a lot of dignitaries also, speakers from different area, those who are expertise in library science, they have called and will deliberate together. And today, as we gather and commemorate our birth anniversary of Professor S.R. Ranganathan, it is his 134th birth anniversary. We are gathered together and we pay tribute to him, and for our lifelong dedication to library and information science. And he is none other than, he is the father of library science for all of us, and he has this noble profession has created to empower, and we should take a proud of it. Round of applause and tribute to S.R. Ranganathan. And the theme is very, very apt today. The reimagining information and education through online libraries and artificial intelligence. As you know, traditional library and the way we are talking together, it's very, very apt today. And the artificial intelligence is now in our stream. Okay, if you last 3-4 years, it is running. We are always trying to add some new technology to our fold, but artificial intelligence has taken the new shape together. Another decade is the decade of artificial intelligence. So we'll discuss about it, and eminent speaker will come and deliver it. And I take this opportunity to welcome, okay,
our distinguished speakers and guests and who enlightened us today. And Professor Manasi Goswami, I welcome you, Principal of RIE, to grace us this occasion as a guest of honor. And we are also, and Kaliprashan sir, Director Higher Education, Government of Odisha, as our chief guest, and he will enlighten us that he has given us an opportunity to announce some of the librarian posts for us for in college libraries. Thank you so much for initiating that, and it was a very good moment for all our librarians and young professionals. The convention is not just a celebration, but it is a reaffirmation of our objective of mission of our Odisha Library Academy. We always strive to put that how we will impact education, how we will build the skill of librarian. That was our core strength of Odisha Library Academy. So we are gathered here to discuss more about it. On behalf of Odisha Library Academy, I extend my heartfelt gratitude to the advisory members and executive members and the organizing committee for their tireless effort, and of course the RIE Institute providing this opportunity, and we are very much thankful for them. Let us together make this day memorable and milestone in our journey of reimagining our libraries for our future. And young professionals, college students, I welcome you to take this learning to our greater height, and you will be our next generation, so that you will add your value contribution to our profession. So take it forward and grant this as a great success for all of us. Once again, I welcome you all and look forward to enriching the day with learning, sharing, and celebration. Thank you all. Thank you. Thank you so much, sir, for gracing us with your presence. It's a privilege to have you here. We celebrate the dedication and hard work of the librarians who play a crucial role in shaping minds and fostering a love for knowledge. आजकल लोग गूगल को ही लाइब्रेरी समझने लगे हैं, लेकिन एक लाइब्रेरी का असली मजा तो एक लाइब्रेरियन ही दिलाता है। किताबों के महत्व को वही समझ सकता है जिसने उनके पन्नों में खुद को खो दिया है। I would like to invite now Dr. Vibhuti Bhushan Sahu sir, President Odisha Library Academy, to deliver his presidential address. Namaskar Samastanku. Honorable Chief Guest Sri Kali Prasanna Mahapatra sir, Madam Manasi Goswami Madam, Dr. Bhubaneswar Sahu sir, Vijay Panda ji, Madam Pushpal Ratal Negi Madam, and of the dais, Ramesh sir, Sonda sir, Baman Parida sir, and other dignitaries, and all the Odisha Library Academy members. Okay, basically, sir, this Odisha Library Academy is it's a joint endeavor where all the library professionals come together and have share their problem, happiness, issues, whatever we are having. So this particular program gets a success because of the members of Odisha Library Academy. Though I am the president of the Odisha Library Academy, but the ownership is with all the member of Odisha Library Academy. So I don't want to give any credit for myself, but it is the joint effort where all the members are equally important and they are contributing a lot, as a result of which you can see so many people are here and having this particular program. And basically when this organization was started, our first aim was that at least in a year we should have a gathering. And second is that as a knowledge professional, we should discuss something, our professional issues, and we help each other. And as a result, whatever, whenever we face any problem, any professional issues, we talk with each other and we are close to each other. And as a result, today you can see the number of people are here. So this is the beauty about the Odisha Library Academy, and we started in 2015. That time it was RMRC, Bhubaneswar sir was there working there, and Madam that time Madam was director.
Namita madam was director, and during that time, university, Ashok Das sir was the vice chancellor of the Utkal University. Then he inaugurated, he basically launched this Odisha Library Academy. So we indebted to him and RMRC for basically giving us a opportunity, so that I think for last 11, basically 11 years, so we are having this annual meet. We started from RMRC, then we had second first annual meet at IMMT Bhubaneswar, then IOP Institute of Physics, then IHM Hotel Management Institute, then RCM. Then we had online due to the COVID-19, we had online series of webinars. Here I think our Odisha Library Academy got a global branding. Okay, there was that time there was a study which organization has the maximum presence in the social media and the one. So that time Odisha Library was the first, I think, in that. So we take this pride for that. Uh, and second thing, regarding this particular program today, actually I came to RIE for a official works, and we requested Madam Manasi Manasi Gosai Madam that Odisha Library Academy wants to organize this year Odisha Library Academy annual meet. Then immediately she agreed, and she gave her consent to organize the program. So thankful, Madam. We are really thankful to you for giving this opportunity, because now now organizing a program in a reputed institution like you is a very difficult task. So thanks to you, and also Pushpalata Negi Madam for helping us to organizing this program. Basically, this is not a vote of thanks, but at least I should give a acknowledgement as a behalf of my presidency. Second thing, I just want to say, I will not take much of time. Ramesh, Banambar sir will give idea of, talk about the SR Ranganathan, who has already made this profession as a proud profession, and he will tell what he has done and not. But as a library professional, we are really indebted to his contribution to the field, for whom continuous effort and all we are here today, and we are getting academic status of the academic status because of his contributions. Otherwise, sometime when people talk about the library profession, they talk, okay, they are like a clerk, okay. But this SR Ranganathan has made this profession as a I'm not telling that other professions are bad or not, but he has made this profession as an academic profession. I'm going to this particular subject. So basically, as a library professionals, we are moving in a different direction. When we started with physical library, and now we are in a AI-based library. So we have a lot of things to do, because like sir has already advertised. I mean, his department has advertised 225 out of the positions. Maybe there will be some more position, but like when we started the profession, that time librarian was the basically guiding force. Guiding force means whoever need a information, they used to come to the library. Okay, now what happened, they want everybody wants to come, everybody want information immediately. Okay, so that time our role has become very dynamic. Okay, so now where the user has gone, then we have to go there. So in the area of AI and this one, as a library professional, we have to reimagine ourselves and be thorough professional. Basically, what I want to say is that after getting, we should not be happy that okay, we got a job, 9 to 5 will go and will do whatever the job, but to make our profession proud, and you make a effective profession, we should work hard and make the things futuristic, so that people will recognize our profession and give a better one. And last but not least, I must thank the sponsor. So there are because without their support, we cannot organize this program. Like RSC Royal Society of Chemistry, then AA periodical subscription, EBSCO, AVAX, DK Book, Turnitin, TLS Group, IOP, SSBC, BP, and Kite India. So they are happily given their support, and other. I'm not giving a vote of thanks, though Madam will give other things. So I'm sorry if I miss someone. Thank you very much for patience and coming here. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Dr. S.R. Ranganathan's contributions to library science are immense. His 5 laws of library science serve as a guiding principle for libraries worldwide.
As a great S.R. Ranganathan said, a library is not a luxury, but one of the necessities of our life. ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ହେଉଛି ଏହି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। Let us take a moment to reflect on his vision and the impact he had on this field. I would request Dr. Banambara Sahu, retired head, Library and IT Division, ICMR RMRC Bhubaneswar, to give us a keynote address on the eve of National Librarians Day. Good morning, everybody. Respected chief guest, distinguished dignitaries, dear colleagues, friends, fellow library info science professionals, my teachers present here. Happy National Librarians Day. A warm greetings to all of you on this occasion, National Librarians Day, which is commemorated on the 134th birth anniversary of Dr. S.R. Ranganathan, father of library science in India. It is great pleasure and privilege to me to be with fellow librarian and library info professionals in this occasion. Today is not merely a day of celebration, it is also a day of reflection, self-evaluation, and renewal of our committed and library profession. Whenever we talk about a librarianship in India, the name stand above. He is Dr. C.Ali Ramamitra Ranganathan, father of Indian librarianship. His contribution to library science was truly visionary. At a time when libraries were largely viewed as a place where books were stored and preserved, Dr. Ranganathan gave a complete different philosophy. That is famous 5 laws of library science. First law, books are for use. Every book is reader. Every reader is your books. Save the time of reader, and library is a growing organism. The 5 laws are formulated many decades ago, but if we look carefully, there will still a remarkable relevant in today's digital age. In fact, I would say that 5th law, library is a growing organism, has become more relevant than ever. Library has changed, information has changed, technology has changed, readers have changed. Now, therefore, librarian must also change from book to knowledge and knowledge to information. The traditional image of librarian was person sitting behind a desk, issuing and returning books. That image is no longer sufficient. Today, librarian is a knowledge manager, information professional, digital curator, research facilitator, and information literacy educator, data manager, digital preservation specialist, and increasingly AI-enabled information specialist. Our responsibility is no longer simple to help users to find a book, because librarians' role not to find a books, rather the responsibility to help the find the right information, evaluate the information, use it in the ethically way, and create a new knowledge for them. Now, scenario has changed. Digital transformation has come. Library today is not confined within the 4 walls. We have moved from print library to automated library to digital library to virtual library, and virtual library to intelligent library. Now what we are AI library, what we are talking. Users today expect information to be available anytime, anywhere, and any device, on any device. Information needed in any device. Therefore, our libraries must also become increasingly user-centric, technology-enabled, and accessible beyond physical boundaries. That should be the motto of the library professional. But would you like to emphasize one important point? Technology will not replace librarian. What we are thinking that technology will replace the librarian, that is not true. Technology will change the way of librarians work. Technology change the style of working of the librarian, not the you will replace the librarian. A computer can retrieve information, and an artificial intelligence system can generate answer, but the librarian can help user to understand. Now, still then we have some challenges. What the challenges?
we are facing lot of challenges in the library day to day. What are they? There are shortage of professional manpower, limited financial resources, adequate technology, skill of gap skill, digital preservation challenges, copyright and limitations, licensing issues, and cyber security. These are the challenges we are facing. But challenges are also provided an opportunity. The greatest challenge is perhaps the technology. The greatest challenge is whether are you willing to continue or learn. A librarian who stop learning will gradually become irrelevant. That means more challenge is that we have to learn. Then what should we do now? First, let us make a library truly user-centric. That means library should be user-centric, not preserve the materials, providing the information that is the motto of the library. Second, let us become the technology-friendly librarian. Let us become the technology-friendly librarian. Let us embrace the artificial intelligence responsibility. Let us strengthen the professional networking. That means our networking should be strong. In single library can meet every information need. Collaboration and resource sharing and consortia will give a better reflection. Let us protect our profession values. And let us carry forward some vision of Dr. Ranganathan, not simply the remembering him but practicing his philosophy. On the National Librarians Day, let us renew our commitment. What are the commitment? From books to transform the books to the knowledge, from library to learning, and information to innovation, and librarians to leadership. That means a librarian should be a leader of a organization. Because whenever you will be work hard and you work for your organization, then your capability and leadership will reflect, and it will come to your head of the organization that this person librarian is working. That theme, that motto should be there. With these words, I once again extend my warm greetings to librarians and library professionals on this occasion of National Librarians Day. Long live spirit of librarianship. Long live the vision of Dr. S.R. Ranganathan. May our library continue to illuminate the society with knowledge. Thank you. Jai Hind. Bande Utkal Janani. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपणकर आदर्श आमे सबुबले मानिकी चलिबा दरकार We are honored to have Professor Manasi Goswami, Principal, Regional Institute of Education, Bhubaneswar, as our guest of honor. Their presence signifies the importance of this day for the library professionals. We extend a warm welcome to our esteemed guests. Professor Manasi Goswami has joined as assistant professor in the year 1987 as a renowned professor in physics. She has 35 years of teaching experience in UG and 10 years of teaching experience in PG. And now she is the principal. I would request her to give us some address. Thank you. सुमंगलम सुप्रभातम समस्त को नमस्ते वर्षा भिजा सकाळर समस्त को प्रभाती शुभेच्छा At the outset, I pay my hearty and genuine homage to Dr. S.R. Ranganathan, father of library science, on his 134th birth anniversary. Honorable Chief Guest, Sri Kali Prasanna Mahapatra Sir, IAS, Director, Higher Education, Government of Odisha, esteemed former Head, Library and IT Division, ICMR, RMRC, Bhubaneswar, Dr. Banambar Sahu Sir, esteemed President, Odisha Library Academy, Dr. Vibhuti Bhushan Sahu Sir, respected Secretary, Odisha Library Academy, Sri Vijay Ketan Panda Sir, other respectful and esteemed librarian of various reputed institutes who
who are going to be felicitated today. My learned librarians of various reputed institutes of Odisha, all these media person from print media, social media, all journalists and photographers. I welcome you all to this scholarly and epistemic gathering. Sir, I feel highly privileged and delighted to get you all in RI campus. As you all know, it is a very old and reputed institute, well-known institute in eastern and northern eastern region of India for its pre-service and in-service teacher training as well as research programs. These days, as you all librarian, I feel needless to say that these days library have transformed a lot. These days libraries are no more a calm and quiet room filled with rows of bookshelves and stacks of journals and magazines. Rather, it is now a dynamic, digital and community hub. Modern library like our RI library offers technology laboratories, collaborative work, fast online resources, audio books, learning courses like MOOCs, etc., online data for research, media production studio. Many of our media production studio work is conducted at library also. Digital catalog, e-books, online digital learning resources, digital object identifiers, DOIs, repository, etc. Sir, our library is a very unique library. Maybe very different from the library you all are handling. Why? Sir, this library is meant for in-service and pre-service teachers. I mean, mostly for teacher preparation. As you know, teachers usually teach in the way they are taught. So they develop many of these. There are no designated librarians. These teachers only, they perform the duties of librarians. So they develop a school library the way they have seen the design, conduct, and performances of library. They have seen RI Bhubaneswar. So our library space is flexible, not rigid. We use it. Our library space is flexible. We use it to recreate the situation of a school library, like reading corner, storytelling corner, book exhibition, very old manuscript exhibition of books of a celebrated person on his or her birthday. So it is a wonderful experience to think in an innovative way to design and conduct the activities of our library. With a collection of more than 84,000 books, we have 37 national journals and 17 international journals for research. So we have the following facilities. With these terminologies, I know you all are acquainted. We have COHA, we have ONOS, we have DELNET, we have anti-plagiarism software Turnitin, we are having RFID, along with other regular features of an ideal library. My personal focus lies in the facilities of my special needs students. We have few different students here, so now I am focusing my concern about the libraries, how these people can utilize. For those things, we have Braille, we have audiobooks, we have sign language media, we have AI-powered visual description, smartphone screen reader, we have George, computer screen reader, and other accessories we are trying to engage. Our research scholars are asking me for free access to all school journals. So we are not having at present, we are having ONOS. So I am planning this, I am consulting our NCRT library that how these facilities can be extended to our students. And institute is always recognized by its library. Library is the soul of the institute. Sometimes libraries are recognized by the institute, sometimes institute is recognized by the library. If Kanika library, then it is very obvious it is 11% library. So, but all is not always that
not true. We have standalone libraries also. Delhi you will find so many libraries. Indian Central Library, British Library, we have in stock. Similarly, I will give you an example which I had a personal experience. There is a library called Solid State Physics Laboratory that is run by DRDO, and it has a library also. So that institute or that laboratory I have never visited. But library is so popular in Delhi University that all our students, all my friends, we are very frequently visit the library. But I did not get a chance to see the laboratory because I was not a restriction. But that is why library and institute, they are contemporary and complementary to each other. So, and another one thing, this is the month of August. How can I conclude my speech without relating libraries with the Indian national movement? These libraries have served for this intellectual hub, sharing, planning, designing plans for Indian national movements. So, libraries are wonderful places, sir. I feel that you all are very blessed that you are engaged in library, and it is your opportunity. You can read so many books. So, like Bismarck, sometimes I feel if I will have to take a rebirth, I should take a rebirth as a librarian of any of this good institute. So I welcome you all. I hope, I know, I am sure that this day will be very successful for you all and for your deliberation. I also invite that this type of meetings and gatherings you can organize in our institute year after year, so that our institute will be enlightened by so many library activities. So thank you all, and please make this meeting and make this day more and more successful. Thank you all. Thank you so much. धन्यवाद मैडम, आपणकर सुंदर कथा आमको उत्साहित करिछि। एबे मु आमर मुख्य अतिथि को तांको मूल्यवान वक्तव्य रखिया पई निमंत्रण करूछि। We are honored to have Sri Kali Prasanna Mahapatra sir, IAS Director, Department of Higher Education, Odisha, as our chief guest. I request. I have already arrived. Please. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯାହା ଆଜି ହେଉଛି ରିଜନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନରେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ମାନସୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, who has been kind enough to allow us to use this fine, nice auditorium. Thank you, madam. We have our president and secretary, Mr. Bijay Ketan Panda, Mr. Bibhuti Bhushan Sahu, who is the president of the Odisha Library as Academy, Mr. Banambar Sahu, who is the head Library and IT Division, ICMR RMRC, and Dr. Pushpalata Negi, madam, who is the hostess librarian for this occasion. We must thank her also. I know she must have used her good office to convince ma'am, if at all it was necessary. Ma'am was interested, but someone has to tell, someone has to really request her, and that must have been done by Madam Negi. And आपण माने आज जो माने आछंती दूर दूरांतर ओडिसा सारा, आपण मानकर गोटे कम्युनिटी अछि, आपण मानक भितर गोटे भावना अछि, एकतार भाव अछि, because you belong to a profession, professional unity अछि। सेटा भी गोटे बहुत बड़ा जिनस, हमको बहुत जिनस बांधी रखे। आमे अब प्रथमे को हम देश पय हम गोटे भाबु जे हम देश हला हम पय सबटु बड़ा यूनिटी रो गोटे सिंबल ऑफ यूनिटी। केतबेले तापर आसे राज्य कथा, आमे ओडिया, आमे एमती भाषा भाषी ताकू नै कि हम भितर गोटे यूनिटी आसे, तापर जाति को आसे अन्य कथा प्रथा अछि, बट गोटे प्रोफेशन को नै कि जतले आसे आमे समस्त एकता हे जानते। देखंतु आपण माने जो माने थिबे
आपण माने समस्ते गोटिए चिंता करूथिबे कि आम प्रोफेशन टाको आमे केमिति आउरी भलो करिबा, केमिति आम प्रोफेशन टाको समस्ते एक्सपैंड करिवो। सबु कॉलेज स्कूल मानकरे आम प्रोफेशन रो लोक केमिति चाकरीटे पाइबे, जो पिला माने पढुचंती लाइब्रेरी साइंस आजी से माने मध्य केमिति चाकरी पाई कि उपयुक्त नागरिक हेइ परिबे, दुई पैसा रोजगार कर। तो एई जो उद्देश्य नै कि माने आपण माने आसीचंती एवं आपण माने आज सक्सेसफुल होइचंती, सेईटा हला आपण मानक भितर गोटे बाइंडिंग आसो। नले एते प्रतिकूल पाग भितर भी वर्षा होतला, कोटी कोटी बन्या भी आसीची, तथापि आपण माने 200 टू अधिक लोक आछथि, 300 पाखा पाखी आसीबार थिला आई थिंक, बट ठीक अछि। 200 200 एवं पाखा पाखी आछथि। इट्स गुड टू सी गोटे ऑडिटोरियम टा फिल अप हेतिले भलो लागे एवं पूरा दिन सारा आपनकर डेलिब्रेशंस अछि, सब्जेक्ट मैटर ऊपर अछि। आमे खाली इंट्रोडक्शन देके जीवो भरी, बट आपण माने रही करी मतामत विनिमय करिवे। आज होची एसआर रंगनाथन जी कि आपण जहां को मानुचंती जे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तांकर 134तम जन्मदिन। तो 134 इयर्स बिफोर से जन्म नहीं थिले एवं जेतबेले आपण मानक भितर हमर केही ए भितर आमे जन्म भी हेइ नथिले, सेतबेले से हमको रास्ता देखैथिले, दिग देखैथिले कि आमे केमिति एटा गोटे मूवमेंट हबो, केमिति आजी गोटे सेटा गोटे फ्यूचर रे ता रोल कोन रहइबो। थिंक गोटे विजनरी लोक से थिबे, केते विजनरी हेतिबे जे 134 वर्ष तले भारत तले स्वाधीनता हेइ नथिला, सेतबेले से लाइब्रेरी मूवमेंट कथा भाबी पारि छंती। तो गोटे विजनरी गोटे लोक जे बड़ लोक थांती, महात्मा थांती, जो मानकर जो माने आमे जहा को माने जे गोटे इंटेलेक्चुअल लोक भी पारती, जहाँ भी कहि पारिबे, से निश्चित भाव में तांकर समय ठू निश्चय आगो को भाबिबे। सेईटा होची गोटे महान लोकर, गोटे महान मनीषर एटा हला परिचय। तो जेतबेले आरंभ करिथांती आपण भाबिबे जे गोटे छोटिया जिनसरु से आरंभ करथिबे, किंतु आज से नथिबे, आज से नाहंती, किंतु से निश्चित भाव में गोटे खुशी लागिबो जे एई भले मूवमेंट आमे ओडिसा रे, इंडिया रे, एंटायर इंडिया रे आमे स्थापन करि पारछि। गोटे नेशनल तांको को नेकरी गोटे आमे भी तांको सम्मान देइछे, आपण माने तांको सेटा रिकॉग्नाइज करिसंती, तांकर नारे आज जो दिन पालन करूछंती। तो दैट शोज योर कमिटमेंट टू योर जॉब एंड द रेस्पेक्ट यू हैव टू दैट ग्रेट जेंटलमैन। लाइब्रेरी गोटे कॉलेज रे गोटे माने हमर जेमती बेसिक फैसिलिटीज जो भी कॉलेज टे हेताउ, स्कूल टे हेताउ, छोटो होताउ, बड़ हेताउ, गोटे लाइब्रेरी तार निश्चित भाव में गोटे मेजर रोल प्ले करे। कॉलेज टे हेइथिबो, लाइब्रेरी नथिबो, एटा हमें केबे भाबी परिबानी। निश्चित भाव में 10टा बही थिबो सेतरे, स्कूल टे हेइथिबो माने निश्चित भाव में गोटे लाइब्रेरी थिबो। कारण लाइब्रेरी आज जुगरे सेना मोबाइल आसी गला, जो थरे कि नेचुरली टिके लोक डाइवर्ट हो जाउछन, न्यूज़टा पाई जाउछंती। किंतु आमे मन रखिछु आम छोट बेले भी, आम मते मो बापा जतले मु जाई कि भलो स्कूल रे रिजल्ट करथिली, मते प्रथमे कहले चल जीवा तते गोटे बही किनि देबी। आई वाज वेरी हैप्पी, बहीटे मिलिबो, ठीक अछि। सेतबेले बही पाइबा भी बहुत कष्ट थिला। गोटिए मॉडर्न बुक डिपो थिला आम बेला रे, मास्टर कैंटीन रे आमे गलु। सेटु से मते कहले तू गोटे चैम्बर्स डिक्शनरी देले। डिक्शनरी रो वैल्यू गोटे सेतबेले थिला, एबे कमी गलानी। एबे पिला मानक भितर आउ से इंटरेस्ट भी आसुनी, वोकैबुलरी ऊपर तांकर स्ट्रेंथ नै, तांकर इंटरेस्ट नै। कारण टाइम सहित एवरीथिंग चेंजेस, टाइम सहित एवरीथिंग चेंजेस। मनुष्य भी पर्टिकुलरली आमर जो एटीट्यूड, थिंकिंग आउ थॉट प्रोसेस रे बहुत गुडे परिवर्तन आसे। तो मते गोटे डिक्शनरी बाबा देइथिले सेई समय रे, चैम्बर्स रो डिक्शनरी बहुत सरू सरू पतला पतला था, हम तो देखिक पढ़ू, किंतु डिक्शनरी पढ़िबार जो आनंद थिला, जो खुशी थिला, सेटा गूगल रे मिलुनी। मु सब बेले पिला को कहूची, मो पिला मानक भी कहे जे तमे काहे कि गूगल को जाउछ, बट गूगल इज इजी। काहे ना गूगल मार देले फटा स्क्रीन आपन को इन्फॉर्मेशन ता पाई गेले, केते ये खोजिबो, काहे कि पृष्ठा पृष्ठा खोजिबो, ए टू जेड पुनी मन पकेबो, पुनी ए पुनी अल्फाबेट को जिवो, पुनी थर्ड अल्फाबेट भी मिसी पारे, फोर्थ अल्फाबेट को जाय कि आमे गोटे वर्ड को पाई परिबा। तो डिफिकल्ट आ बहुत समय गोटे गोटे वर्ड रो आमे हठात किनी जानी परिबाने, आमे भाबुतो जे सिमिलर वर्ड थिबो। तो डिफिकल्ट थिला, किंतु सेईटा रे ही मजा थिला। पाठ पढ़िबार जो आनंद थिला, जो पढ़िबारे जो खुशी थिला, जो सेटा थिला। से छाड़ंतु, से टॉपिक आजिर नुहे। आपण मानक कथा रे मते जेमती
बानाम्बर बाबू कहले कि विजय बाबू कहले जे आमे लाइब्रेरी पाई लाइब्रेरियन मानक पाई गोटे एडवर्टाइजमेंट बाहर करछु मु अछि एसएसबी रो प्रेसिडेंट दीटा मु रोल प्ले करछि गोटे होछि एसएसबी रो प्रेसिडेंट एपटे डायरेक्टर हायर एजुकेशन अछि हमर जो एडेड कॉलेज पाखापाखि 700-600 कॉलेज अछंती सेठी हमर गोटे नैगिंग प्रॉब्लम थिला कि हमर लाइब्रेरियन नथिले तो कॉलेज मानकर लाइब्रेरियन नथिबार जो प्रिंसिपल पे गले सर हमर लाइब्रेरियन नांते हम पिला को केमति दो असिस्टेंट लाइब्रेरियन नांती तो आमे कोन कलु लाइब्रेरियन रो कैडर रूल तयारी करिकि परीक्षा करिकि एबे तांकर परीक्षा पई एडवर्टाइजमेंट बाहर करछु बेसी नै 222 टा पोस्ट 225 टा पोस्ट हेछि बट हमर जति कि वैकेंसी आसीथिला एबे क्वेश्चन आसुची जदि फर्दर वैकेंसीज आसीबो आमे डेफिनेटली फिल अप करू कारण गोटे थर कर देलु गोटे बैच रो सरी गला पाखापाखि एस्पिरेंट्स अछन 4-5 हजार पिला बहुत वर्ष धरी कि एडवर्टाइजमेंट हेइनी पिला को भीतर आशा रही है गवर्नमेंट रे पाई जिवे एडेड कॉलेज हेले भी एटा तो डायरेक्ट पोस्ट पाइबे पूरा दरमा रहिबो पेंशन तो एबे कटि गलानी पेंशन तो न्यू पेंशन स्कीम लागू हो जाई बट हेले भी गोटे जो गवर्नमेंट चाकरी रो जो आनंदटा थाए सेईटा पई पिला भी एति पई इंटरेस्टेड होचती भलो कथा तो कंपटीशन हबो कंपटीशन रे बेस्ट ब्रेन आसीबे सो इट हैज बिकम लाइक एनी अदर एग्जामिनेशन ये गोटे भी परीक्षा है कि पूरा तार गोटे प्रक्रिया रे से माने आसीबे तो ये जो जिनस सेटा नथिला आगे गोटे लाइब्रेरियन पोस्ट पई आपनकर छोटकाटी एडवर्टाइजमेंट बाहरी जाउतला किछि लोक जानुथिले पके दउथिले तांका भीतर हेई पतला ओडिसा सारा पिला पकेबे गोटे कंपटीशन हबो सेई थरे से माने आसीबे जेतो बळे डेफिनेटली हमें किछि भलो पिला पाइबा एवं दरकार मध्य कारण लाइब्रेरी मु चाहूची मु गोटे मझिरे गोटे गाइडलाइन तांकु देइथिली प्रत्येक प्रिंसिपल को लिखिथिली तमे गोटे काम करिवो प्रत्येक 10-15 दिन रे गोटे क्लास रो पिला को सब नेकरी जिवे लेक्चरर माने रीडर माने प्रोफेसर माने लाइब्रेरी को जिवे पूरा इंस्ट्रक्शन देथिले मु कहली समस्त एकाठी गले जगह हबोनी तो आज आपण देखिले जे +2 फर्स्ट ईयर रो पिला को चलो जिबा लाइब्रेरी बुली के आसीबा साइंस रो गले कॉमर्स रो गले आर्ट्स रो गले के को दिन जिवे पिला को तमे छाडी दबो कब तमे जाओ बाछ तमरो जे कोनोसी बही आनो पिला सो मट जाऊ नांती पिला मन को जाऊ नांती पिलांकर इच्छा नै लाइब्रेरी जीवा को बरम कैंटीन रे बसिबे किबा रास्ता रे बुलिबे बट जदि आमे तांकु नै करी जने लेक्चर जीवो एवं तांकु बुले की देखेबो बही विषय रे बुझेइबो डेफिनेटली समान इंटरेस्टेड हेबे एवं तांकु सेई दिन गोटी गोटे बही आमे दबा तांकु इश्यू करबा एवं इश्यू करि सारी 15 दिन की जति दिन गैप थिबो तादरे हम पुन तांकु कहबा तमानी के फेरेइ दियो ये प्रक्रिया राउंड दी ईयर चलिबो वर्ष वर्ष धरि के चलिबो लाइब्रेरी गोटे एक्टिव हे जिवो पिला माने जिबे बही रे धूली मळी लागिबोनी कारण पिला ताको सब बेले धरुथिबे सफा हे जाउ हमको जो पोछिया को पड़छि सफा करिया को डस्टिंग करिया को पड़छि ताकू भी दरकार नै गोटे चल प्रचल हबो चल चंचल हे जिवो चल चंचल हे गले लाइब्रेरी ताकू देखिले भी भल लागिबो मु केते गोटे लाइब्रेरी को जाउछि से लाइब्रेरी रे पूरा अंधार अंधार हे कि अछि से जगह गोटे भूत कोठी भलिया लागुची कहले भी अत्युक्ति होबनी केचे गोटे जगह नॉट एवरीवेयर बट सम प्लेसेस सेटा गोटे भलो धारणा दउनी कारण लाइब्रेरी टा गोटे वेल लिट बिल्डिंग हेतिबो से ऑफिस माने से रूम टा टिके लाइटेड हेतिबो प्रॉपर वे रे तार बही गुडी को सजड़ा हेतिबो जो बही डिस्कार्ड हे गला ताकू नै कि हमें ऑक्शन करिबा बा बाहर नै कि बिकी दबा जहां भी प्रथा अछि ताकू करिया को पड़िबो कारण प्रत्येक बेले सिलेबस चेंज होची तो ये सब काम देखला बेलू गोटे गोटे लाइब्रेरी आम गला बेलू देखला बेलू असजड़ा है कि बही फोपड़ा है तार जमी किसी बही किणा है खोला है ना किसी बही को सजड़ा है कि ठीक भाव रखा भी होनी तो मोर दुख लगे कहीं जोटा को लेकिन आम प्रोफेशन अच्छी जो जिनस को लेकिन ब्रेड एंड बटर जो आम आज निजर परिचय पाइचे घर दर संसार करचे से भी किछिटा आमर अवहेला जो शायद मत कही पारि प्रिंसिपल माने भी दायी लेक्चरर माने दायी स्टूडेंट माने दायी एबव ऑल दी लाइब्रेरियंस आर आल्सो रिस्पांसिबल कहीं ना मु भी जाई की कही पारि कि सर मोर मैडम देखो दिस इज फेट ऑफ माय लाइब्रेरी व्हाई आर नॉट मेकिंग इट मोर लाइवली कही भी यस कही पारि मत जन लाइब्रेरियन कहले कि नहीं हमर कोर्स प्रिंसिपल एते एक्सेस दोना मु जानि छी बट एटलीस्ट तो मते कहया सुविधा हबो जे मु जाइथिली प्रिंसिपल को अटेंशन ड्रॉ करिछि लेखिकी देइछि एतिकी बही हमर कलानी एतिकी बही आसीबो नुवा सिलेबस बही आसी खोला हेनी कोन करा होछि किंतु एटा हो नाही तो बेले बेले सेटा गोटे हमर निश्चित भाबे हम पई गोटे चिंतार विषय आपण फॉरेन कंट्री जिवे वर्ल्ड रे जोटा सबुटु बड़ लाइब्रेरी कोटा वाशिंगटन डीसी रे थिबा लाइब्रेरी हां सो जदी आपण तार
जेतिकी अच्छी आपण सेल्फ जदि गोटे 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 से सेल्फ को लगे जिबे 834 माइल पर्यंत तार लंबा अच्छे तो एते देखंतु तांकर कोन बेसी पढ़िया को इंटरेस्ट अछि वाशिंगटन टा अमेरिका रो सबटु बड़ शहर नुहे इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री किंतु ताकु जदि न्यूयॉर्क सहित तुलना करिवे कि लॉस एंजलिस सहित तुलना करिवे वाशिंगटन इज नॉट द बिगेस्ट सिटी इज नॉट द लार्जेस्ट सिटी बट गोटे लाइब्रेरी से माने करि पारछंती कैपिटल सिटी रे करिछंती जोटार कि जेतिकटा सेल्फ अछि से 8 जदि लगे लगे रखिबे 834 माइल पर्यंत जीव ता माने हमर बालेश्वर ठु आउर पर्यंत चली थिबो ता लाइब्रेरी रो सेल्फ सॉरी तो से माने केते इंटरेस्ट नउछंती केते बही कलेक्ट करि पारछंती पोर्तुगाल रे गोटे लाइब्रेरी अछि जानुनिया बोली से लाइब्रेरी रो हस लागिवो आपन सुनले हमर जो राती रे सब बुलु नांती कोन सेडा कहंती जो राती रे आसंती बैट्स उडाक बैट पक्षी को सब पालती कहीं जानी बैट पक्षी कौन कर जो जो पोक गुड़ाक आसवे काले बही को नष्ट करदे से माने बैट पक्षी को पालती सो दैट से बैट माने जाइए से पोक को खाईदे जो थे कि बही गुड़िक ठीक भाव रही तो इनोवेटिव होती से इंटरेस्ट नहीं तांकर मन भितर से माने रखिचंती जे बहीटी को मु जत्न नेबी जेमती पिला को मु जत्न निए गोटे बाप गोटे माँ जेमती पिला को जत्न निए गोटे बही को भी जत्न नेबा को मते तो बहुत दुख लगे मो घरे मु रखे माने मु बही की मो पाखे हजार हजार बही अछि बहुत बही मु किने मोर गोटे खराब अभ्यास कहले मु काली जन को पचारथली से कहला तमरो ऑब्सेशन कोन अछि काली ही इनफैक्ट मु कथा होतली मु जान नथली जे आज लाइब्रेरी आसी बोली से लाइब्रेरी आसन मीटिंग पई आस नथली एंती बाय द वे कथा होतो मु कहली गोटे हमर समस्तंकर गोटे ऑब्सेशन रही जाउची एडिक्शन कहले भी चलिबो सेट सब बेचारा तमर तो किछि एडिक्शन नाही यू डोंट टेक टी मु तो सेमती चा पीवा को आग्रह नाही अन्य जिनस तमर नाही सिनेमा फिल्म भी सेमती देखेनी कि सेमती नाही गोटे साधारण भाव एडिक्शन कोन मु कहली मोर एडिक्शन होची गोटे बही किनिबा मु सेतरे मु पैसा पत्र खर्च करिया को दुविधा करेनी मो पाखे बही पढ़ी पारिबी न पढ़ी पारिबी लोभ लागिले मु संभाली पारेनी बही दुकान को गली कि नले देखिबी जोट देखली लिटरली गोटे जगह मु कही कि नहीं मत गोटे गेस्ट करी डाकन धर मत जन डाकिले एनसीसी एनएसएस वाला बारंबार डाकुचंती कारण मु एनएसएस तो हमर सब विंग रे अछि मु कहली तमे सबुथर मते काई गोटे गच्छ दउछ आ गोटे उत्तर दउछ कन्वर्ट इट टू अ बुक आई वाज मते लाज करियार कोन अछि तमे 500 टका 300 टका 400 टका जिनस दउछ बहीटी हार्डली गोटे जत्ते दामिका बही आपण किनिबे से बहुत बड़ बड़ बही कथा कहि परबिनी साधारण भाबरे भारत रे 500 रु 800 टका भितर सुंदर सुंदर बही 2-3 भी हो जाई पारिबो तो तमे तो मते लाइव दउछ गोटे उत्तरीयटे मु घरे नेकी ताको थौची काहा को देबी बोली भाबी पारुनी बक्स रे भर्ती हेकी से उत्तरीय थुआ लाणी मु मात्र 1.5 वर्ष हबो डायरेक्टर हेची 1.5 वर्ष भितर किछि कम अति कम रे 60 टा खंडे उत्तरीय थिबो हाँ 2 मास तो होची निश्चित भाव 2 मास को तो प्रत्येक दिन गोटे गोटे काली जीवी केन्द्रापड़ा जीवी निश्चय गोटे उत्तर मिल आज आपण मैंने दे ना हो लखिली सो लाइब्रेरियन माने भाभी पारिछंती जे नाही उत्तर हमें दबानी बही भी दियंतुनी आई एम नॉट आस्किंग फॉर सो कथाटा होची जे अच्छा उत्तर अच्छी सो एबे भी चांस अच्छे आपण रखी दे पारिबे नहीं ताकू न भी देले मु बहुत खुशी हेबी हां तार कारण होची हमर जति की यूटिलिटी दरकार सबुले मन रखिथिया कथा हमर जहां आवश्यक सेतिकी आमे नबा कोनोसी जिंस रे खाद्य पदार्थ टू आरंभ करी पैसा पर्यंत जो दिन मनीष तार लिमिट को जानी दबो जे मोर एतिक ठू अधिका दरकार नाही से दिन से किछिटा गोटे कंट्रोल आसला तार पैसा ऊपर लोभ लागिवो मु एते पैसा पाउची आउरी चोरी करिवि आउरी पैसा खाइबि आउरी आनिबि कोन हबो अल्टीमेटली किए नबो से पैसा किए नोची से पैसा हम पिला माने नेबे पैसा कथा छाड़ दियंतु खाइबार भी से मु जाइथिली 4 दिन तले गोटे मॉल को जाइथिली मो पुओ पई गोटे शर्ट किनिया पई मो स्त्री कहला कि नहीं गोटे काम करनो तम पई गोटे शर्ट नहीं जाओ मु कहली मो पाखे तो एते शर्ट अछि मु नहीं पारबी आई जस्ट नॉट लुक एट शर्ट्स काइन देखिले काले लोभ हो आनिबा दरकार नहीं कारण मते गोटे जगह रे कंट्रोल करिया पड़ियो 2-3 हल जोता 8-10 15 शर्ट 8-10 पेंट
मनीष को सेतिकी दरकार गोटे घर रहा गोटे 2000 2500 कि 1500 स्क्वायर फुट घरटीए गोटे खट जोटा कि 6 फुट 6.5 फुट हम आम मिनिमम रिक्वायरमेंट से सकाଳେ गोटे टूथपेस्ट गोटे टूथब्रश थिंक ऑफ द नेसेसिटी थिंग्स जोड़ाक दरकार जहाँ को नेले आम चली पारिबा एवं सेई थरे आपण देखिबे आपनकर 50% ऑफ द हैप्पीनेस कम्स टू यू नेचुरली द डे यू आर एस्पायरिंग फॉर अदर्स मोर आहु दरकार आहुरी आग्रह मते डाकंतु मते सम्मान दियंतु यू विल फील अनहैप्पी कहीं गोटे लोक रिटायर कला परे भांगी पड़ुचंती जो माने बेसी बेसी पोजीशन रे अछंती बड़ बड़ पोजीशन रे तांको बेसी कष्ट होउची कारण तांको जेतल चाकरी रे थांती तांको लागे कि मो चाकरी रे मते सम्मान मिलुची मते सम्मान दउचंती लोक डाकी दउचंती सार सार कहउचंती रास्ता खोल दउचंती आज मो एली आसुथिली मो गाड़ी को अटके दला मोर जणे सिक्योरिटी गार्ड तो नेचुरली मोर ईगो हट हैला मु तो को भगवान नुहे मु तो को भगवान नुहे ना मोटे मनीष विथ फ्लेश एंड ब्लड तो से जतले मते अटकेला मु कहली बाबू रे मु टिके रखुची 2 मिनिट तते मत समय दे मु टिके आसुची ना ना आपण गाड़ी एठी रखी पारिबे नाही कहबा को जाउची एटा काहे कि आपण के शिक्षा अछि मते पय शिक्षा अछि आपण मानन को भी शिक्षा अछि से तार जॉब तियारी से तार जॉब ता जॉब टा कोन जे से कहार गाड़ी देखिबो केमती रहिबोनी किछि असुविधा हबोनी सब ठीक भाबरे हबो काले जदी ब्लॉक हे जाउची रास्ता ताल देखिबो मोर ताकू रिक्वेस्ट करछि विनम्र भाबरे कहउछि मते 2 मिनिट बाबू समय दे मु टिके जाई कि आसे से भाबितला जे गेस्ट आसीबे गेस्ट से जानि जे मु ही गेस्ट बुझि परछथि मु ही गेस्ट से जान नथिला से भाउछि गवर्नमेंट गाड़ी रे आसीबे किंतु मु सरकारी गाड़ी छुट्टी दिन रे यूज करे नाही जति जदी हेई पारे मैटर ऑफ प्रिंसिपल गोटे आज आम मैटर ऑफ प्रिंसिपल को रखी कि बहुत समय कष्ट पाइचु बहुत दुखर पाइचु किंतु ता भीतर भी गोटे आनंद पाइचु आज यदि मु सरकारी गाड़ी रे आस्था माइट भी मते से ह्यूमिलेट हेबा को पड़ी नथांता से मते कहला ना आपण रखी पारिबेनी गाड़ी बारंबार कहला परे हमर विजय बाबू दौड़ी के गले समस्त गले बानंबर बाबू गले बट से सुनिया को नाराज गाड़ी नेला मोर नेकी खरा रे रखिला मते आउ किछि दुख नै मोर दुख अछि जे मु एबे जे तो जीबी आपन एते सुंदर भाषण एयर कंडीशन रूम रे मैडम बसेबे तापर जेतले मु जीबी सेटा गोटे हॉट चैम्बर है कि मो गाड़ी थी आउ किछि दुख नै कोन गाड़ी रो रंग छाडी जिवो ना गाड़ीटा गोटे गोरा रंगटे थिला बहुत कला हे जिवो टैनिंग हे जिवो ता नुहे मोर ओनली दुख होची गाड़ीटा छाई रे थिले मते टिके कंफर्ट लागियो मु चले कि निजे जीबी कारण ड्राइवर भी नाही किंतु से लोक कोन करियो ताकू तो कोहा हेछि तो खाली आमे जदि सेही जिंस को धरी बसिबा जे नै मोर कर्तव्य या मु करबे एठु अधिक जीबेनी सेटा हबो नाही सेठी से प्रैक्टिकल हबार थिला ता भीतर जदि टिके भी मानविकता थांता तार हबनी कारण ता चाकरी ता मन भीतर तार सेटा आसी पारिबनी किंतु आपण माने आम मन भीतर आसीबो मो पाखु जेतले गोटे लोक देखा करियो आसंती जे भी आस्ता गोटे पियोन टे आस्ते गोटे क्लर्क माने एनी टॉम डिक हैरी मु कहार पोजीशन को देखि डाकेनी मते तांको फर्स्ट मु चीट टे देले मु 5 मिनिट 10 मिनिट मैक्सिमम हेले 15-20 मिनिट डाकी जत्ते बड़ कथा होता है जत्ते इंपोर्टेंट मीटिंग होता है जहाँ भी कहता कारण मु भाबे गोटे लोक मो पाख आसी जदि मु एले काली जाईची गोटे डाक्टर मते टाइम दउनी मु जदि जाईची गोटे जगह मते छिडा है कि घंटाटे मते मते केही आसुनांती माने रेस्पोंड करू नांती हाउ डू आई फील तो से फीलिंग टा मु आने ताको आग पछारे बाबू कूट तमे आछछन्ती आपण कूट आछछन्ती आग चेयर टे दे बसिया पई त कह कूट आछछन्ती ना एठो आछ बहुत जनकर काम हेई न पारे समस्त काम मु करि परिबिनी केबे भी संभव नुहे किंतु आपण परीक्षा करी देखिबे पचारि जिबे आपण को कॉलेज रो आस्ते जदि पचारि जे ना डायरेक्ट बो जाईथिली केतोले केतोले आमे टिके माने जदि एकदम जोडा कहंती माने एई लाइब्रेरी एसोसिएशन आपण तो जो पिला माने आसी छंती केते थरो मो पाखु आछन से माने तुम कहछि बाबू रे तमे काहे केते व्यस्त होछ 200-250 पोस्ट तमे तो 40,000 पिला अछ 4,000-5,000 समस्त कोन पाइबो कहले नाई आपण काहे की परीक्षा करबे केबे करबे खाली एतिक आउ किछि न थाय तांकर ओनली थाय जे प्रेशर ग्रुप भले आसीबे हमको परीक्षा शीघ्र करंतु तो मु कहली ठीक अछि परीक्षा करलु 220-25 टी पिला पाइबो बाकी तक कोन हबो कि तो मु सेतले भाबे कोन मते लागे काहे की गोटे लोक मो पाखु आसुछि से मते भलो पाई के आसुनी देखा करिया को आसीनी बुलिया को आसीनी खाइबा को आसीनी से आछि तार गोटे किछि काम अछि जदी काम अछि तारे भगवान मते गोटे किछि देई छंती जोथि पई कि मो ता पाखरे काम तार मो पाखरे पडुछि जो दिन आपण सेई गुडी को भाबी देबे आपण को लागिबो आपण छोटो से लोकटा आपण हे गले बड़ माने खराब सेंस रे भलो सेंस रे से कोटो आसीछि
दूर आस जन मैं हठात दिन पचे कौट आस चिकिटी आस किए आस ना उदलू आस किए कह ना मुझे आग तुमको कही मुझे जीव केमती बस आस ना गाड़ी आस ना गाड़ी आस बस आसती आई गो टू द एक्सटेंट तुम कौट बाटर गले कौट खाइब केमती जीव आग से तुम कम कौन हो कहीदि कम कर दिखती भी जाऊँच कम 50% 70% लोकर कम हो ग्रीभेन्स आज डायरेक्टरेट रे कमी जो हायर एजुकेशन पुला पुला ग्रीभेन्स थिला आज लोक शून्य खाली ट्रांसफर केसेस आसवे सेटा मु देखेनी से आउ जण देखुचंती सेटा जॉइंट सेक्रेटरी देखुची तो मोर एटा कहवा कथा होची मु आपन किछि एटी गोटे बहादुरी देखै कहूनी कि गोटे अधिका कथा कहया चाहूनी मोर कहिबार ओनली रिक्वेस्ट हला ई जो मानविकता काई हजे दोची मु तते रिक्वेस्ट करूची मोर जदि काली गोडटा भांगी थांता मु गाडीटे रखिछि मो गोडटा भांगी छि इनफैक्ट आई हैव ब्रोकन लेग तते मु रिक्वेस्ट करूची आज्ञा टिके रखुची 2 मिनिट दैट फेलो नेवर लिसन टू मी कहीं ता भितर से मानविकता हरई दोची तू सिक्यूरिटी गार्ड है मु सिक्यूरिटी गार्ड को किछि कहूँ तो जॉब तू करिछु ठीक अछि एटलिस्ट आसी पचार थांतु कि आज्ञा मते अच्छी प्रिंसिपल मैडम कहिसंती एई रास्ता रे गाड़ी रखियान मु पूरा कॉर्नर करथिली कहा रास्ता को कारण मु गोटे सिटीजन ऑफ इंडिया मु भी जानि छी कोन करिया को पड़िबो आमे तो लोकन को शिक्षा दोछु मु केमती सेटा वायोलेशन करिवि बट से इनसिस्ट कला मते कला अपन बाहर कर टाणी की मु भितर को पसुची मैडम को चैम्बर को जीवा पंत जाइनी से पोटी को मते बाहर करी करी नाला मु गाड़ी नेली खरार रखिली पुणी आसिली तापर सेतो मैडम भरिका दौड़ी के आस्ते सुनिले जहाँ भी हला बट मु सेठी अपसेट हे गली मते निजु को खराब लागला जे मु काहे कि आज एमती बिहेव कली काहे कि मु आज एते रिएक्ट कली काहे कि मो मित्र एते राग आसला ई ह्यूमिलिएशन जो कि ईगो मोर अछि कि मो भीतर गोटे ईगो अछि कि यस मु डायरेक्टर मो गेट कोन से अटके दला ना मु से ईगो पई कहूनी मते दुख लागिला जे मनीषटा कहीं मनीष भाया व्यवहार करूनी तो भूपेन हजारिकार जो गीत थिला मानुष जदि से होए ना मानुष दानव की अखन होबे मानुष एमती गोटे अछि आमे सेही जिनसटा को मन पकांतो आज्ञा से सिक्यूरिटी गार्ड रो जॉब को मु जमा मना करूनी he has done his job but while doing his job he should have that humanitarian human attitude that is missing डाक्टर पाखु आपण जिवे से जेमती आपण को माने गोटे रोगी कोन चाहे डाक्टर को पाखु से आग चाहे किछि विपद भल कथा केन रोगीटे से ता देह खराब अछि डाक्टर भाबुची जे मु ता गोटे आई एम गिविंग अप सर्विस मते कोन तू 1000 टका दे को मो मुंडो किनी दिछु कि मुंडो किनी नि सत कथा 1000 टका देले बड़ कथा न किंतु तुम तो सेही टका रे बंचुछ ठीक अछि बट सब डाक्टर से आनोंती किछि डाक्टर कथा कहूछ तुम काहे कि निजु को भाबियो जे तुम गोटे भगवान हे कि आछो पाठटे पढितलो आमे आज पाठटे पढिछु चाकीटे कर देछु मु आज डाक्टर ही मोटे डायरेक्टर हे गेली कोन हे गला सेतरे तो से जो गोटे छोट माने चाकरी लोकटे भी मु छोट बड़ चाकरी जमार कहबी आई डोंट हैव दैट समस्ते तांको प्रोफेशन से ता पिला मु सबले भाबे होटल रो जेतले मते आनी गोटे बॉयटे खाइया को दिए एवं पोछि दिए मते टेबुलटा मु बहुत समय भारी पेंसिव हे जाए मु कहे जे आज एई लोकटा ता घर को जेतले जीवो ता स्त्री पाखे कहबे खाइया को बाढलु मते खाइ देबी बासन टी उठेया कथा हले ता स्त्री की पिला आसी उठेबे किंतु से जानी नि जे से बाप हिसाब माने से एठी तो रोलटा आसी जाउची से गोटे अजणा असुणा जाऊ लोक भी जाइतो तार बासन माजुची सफा करूची आनी थोउची मते भारी दुख लागे कहार से तो गोटे बाप होइतिबो कहार तो गोटे स्वामी होइतिबो जेतबेले आम पिला मानकर समस्त लागे ता बापटा हला सबुठु बड़ दुनिया रे ताठु पावरफुल आ केही नांती जो चाकरी जे कर मो पुला भाबू तो मो बापा बहुत बड़ ट्रम्प रो पो भी भाबू तो से बहुत बड़ मो दी को जदी पिला पिली था से भी भाबू था से इट इज नथिंग टू किछि भूल कथा नहीं किंतु से जो होटल रो बॉयटा जेतल ता घर को फेरुथबो से होटल रे बुलिला बेल को से शर्ट पैंट पिंदी की पूरा सूट बूट पिंदिबो जेतल बाहरिबो साइकिल खंडी धरिथिबो केते टका दरमा 15000 10000 12000 टका रे पिलार चाकरी करचंती साइकिल टे धरि की घर को जीवो घर को गले खाइबा को भल लागियो सब दिन होटल खाइबा ना घरे गले खाइबो स्त्री कहबो मते टिके बाढी दे से स्त्री आनिबो ता खाइबा को दबो ता प्लेट प्लेट देकी पुनी खाइ साला पर थोई दबो तो सेही लोकटार रोलटा केमती रिवर्स करूची घरे गले से तार देखौची तार आधिपत्य होटल रे आसला बेलकू हिज आसिकी आज्ञा सार सार करके टिप्स ने देकी जाउची तो सेथरे भी किछि नै भलो सबु चाकरी को हम सम्मान दबा प्रेस्टीज दबा ताकू भी हमें रेस्पेक्ट दबा कारण से अर्न करूची लुचि की चोरी करी कार पैसा खाइ जाउन से 15000 पाउ कि 10000 पाउ कि 50000 पाउ से कष्ट करूची रोजगार करूची पैसा पाई कि ता फैमिली चलौची सो वी शुड सैल्यूट दैट बट कथाटा होची सबु कला बेलको गोटे ह्यूमन अप्रोच रे कर
से सिक्यूरीटी गार्ड जदि आज मते पाखे आसी कहितांता सर मो प्रति निर्देश अछि जे एठी गाड़ी रखिया मना करछन प्रिंसिपल मैडम आपण टिके गाड़ी टाको सेपटे रखि देले भलो हो मु कहितांती रहितारे बाबू मु आसी छी मु प्रिंसिपल मैडम कहबी जदि मो गाड़ी अलाउ करियो नले मु गाड़ी नहीं सेट रखि देबी दैट वुड हैव एंडेड से भलो रे कथा हितांता मु भी भलो रे कथा हितांता he was trying to show me his power nothing bad power भी देखाओ किंतु जगह जगह रे को जगह रे केमती करिया कथा सेटा से कथा मु एटा उठाउ चाहू नथली खाली मु उठेली एथि पई कि हमकु समस्त को गोटे लर्निंग एक्सपीरियंस मते भी लर्निंग एक्सपीरियंस तो ये जो आज आपण माने करिसंती मु आउ विशेष समय नेबिनी कारण मोर जतले मु डाकंदी मते के कहिया को मु सब बेले चेष्टा करे आमे तो समस्त जानिचे लाइब्रेरी विषय लाइब्रेरी एमती अछि सेठी अछि ए भला करबा मूवमेंट करबा केमती पिला को अट्रैक्ट करबा पढेया को इंटरेस्ट हो सेडा चलछि यदि किछि जिंस हमें मोर जदि गोटे भी वर्ड आपन को पई जदि हला ना सेई कथा जदि मन को छुईला आपन को भाबिले आपन को जदि चिंता करबा को आज समय देला जे हां 5 मिनिट की 2 मिनिट आपन भाबिबे जे हां ए लोक जनक आसीथिला या हमु जहा कहला तार किछि कथार गोटे मीनिंग अछि ताहले मोर आसीबाटा आज सार्थक हो तो मु करताली रे खुशी हेबिनी किंतु मन भीतर जदि आपनकर किछि भी जिंस को जदि मु टच करिथिबे एवं जदि आपण धरिथिबे एवं जदि एठु गला परे आपनकर जदि किछि भी जदि भूल भटका टिके टिके हमर एटीट्यूड रे इश्यूज थिबो जदि ताकू हमें जदि रेक्टिफाई करि परिबा जदि और जदि भी मु कहूची सब जे मु बाइबल भले कथा कहूची बा मु जदि गीता कहूची ता नहे मु जा कहूची मोर एक्सपीरियंस रो कहूची मोटू बहुत पंडित लोक अछंती मोटू बहुत ज्ञानी लोक अछंती मोटू बहुत इंटेलेक्चुअल लोक अछंती so I am not that intellectual, I am not that ज्ञानी, I am not that very proficient, I am not that very educationally very qualified, but जो little bit of knowledge that I have gathered over the years and experience that I have gathered, more than knowledge I have gathered through experience, that I wanted to share, that I wanted to tell, that I wanted to be imbibed by you. If you find it correct, you imbibe it, otherwise you just discard it also if you don't like, or you just listen and just throw it out to the dustbin. You can also do that, but there is a need to introspect, there is a need to really think कि आमे आज सुस्थ समाज गठन करबा पई आमे जदि सेमती मनोवृत्ति नै कि चलुचे कि आमे किछि भूल करूचे कि why always blame the society, what is happening to us, आमे निजु को निजे ठीक करि पारुचे कि then we'll have a better society. A better society आज जोटा छिबो सेटा आमे हमर जो माने आसुचंती आगामी दिन जो माने नेबे आमो भलिया जो माने बयस होबो जेतले आ 25 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष परे से माने हमको थैंक्स करिवे जेमति आमे आज हम थैंक्स करछे जे आम फ्रीडम फाइटर मानको जोगु आज आमे भारत स्वाधीन हेछि एवं स्वाधीन होला परे आज आमे मुक्तासर बुली कि आमे हम निज तिरंगा धरिकी निजर गर्वर सहित कहि पारुछे आमे भारतीय बोली आम 50 वर्ष परे जो पीढ़ी माने आसीबे से माने मध्ये हमको धन्यवाद देबे जे जा हो आम बेलार थिला आमे सबुठु लकी बैच आम मानकर समस्त जते बसछन मु प्राय देखुची आमे गोटे एज रो अच्छे आमन माने सबुठु पूरा सगड़ गाड़ी रे बसी थिबा किछि लोक थिबे देखि थिबे चा बसी भी थाई परंती रिक्शा रे बसथिबा लोक थिले इंटरनेट यूज करूचे मोबाइल फोन यूज करछे सब जिनस वाईफाई यूज करूचे तो सी जो ट्रांजिशन फेज ता बहुत लोक पाइना कारण आपण आजि पिला को पचारे से माने बहुत जिनस देखि नथि रिक्शा टे रास्ता रे भुवनेश्वर रास्ता रे देखिबा स्वप्न हैला किंतु दिन थिला रिक्शा ही गडुथला आ तार गोटे अलग चार्म थिला छाड़तु से टॉपिक बहुत लंबी जीवो मते बहुत समय कहलिनी कारण एते समय गपी आपनकर गुडाए सब सेशन अछि थैंक यू द ऑर्गेनाइजर्स आई थैंक प्रोफ्यूजली द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड आल्सो द प्रिंसिपल मैम हु हैज बीन काइंड एनफ टू लिसन टू माय जतले मोटी के अपसेट हे गली ततले से मते बहुत काम डाउन कले थैंक्स आ मते धन्यवाद देबी तांको मध्य आपण मानक समस्त को जिते जन आपण माने आसीचंती सुदूर ओडिसा रो विभिन्न प्रांतरु किछि रिटायर्ड लोक भी आछंती आपण माने आई थिंक यू हैव ऑल रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एंड आपण माने आज समस्त धैर्यर सहित बसिबे मते समय देथिबारु धन्यवाद जय हिंद वंदे उत्कल जननी Thank you, so generous. So, and also we are happy that we saw the different side that you are a book lover. Today is World Book Lovers Day. So we are happy that we got you. And one request from our Odisha Library Academy. First is that if you can help us, we came to know that you are also doing OSSB. One thing from our side, one request from our librarian community,
that there is a library legislation pending. So if you can help us to do that. Second one, if you can add library as a subject to SSB exam, because as history, geography, all the subjects are there. Can we add library as a subject there so that people can try OS or IS exam so that they can take it? So those are the two requests from our library community. Thank you so much. ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ରିଡ୍, ଲର୍ନ, ରିପିଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ମନ୍ତ୍ର ଫର୍ ସକ୍ସେସ୍। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। Now let's move on to the important part of our celebration, the felicitations of our librarian who have contributed for the profession. These dedicated individuals are the pillars of our library, ensuring the smooth functioning of the knowledge hub and guiding us towards the world of information and knowledge. Our librarians will be honored. We express our gratitude for their dedication and service. I request our chief guest, Sri Kali Prasanna Mahapatra sir, to felicitate the distinguished librarian. I would request to come upon the dais Dr. Nilakantha Sarangi sir, retired librarian, Parija Library, Utkal University, and the founder of Pandit Nilakantha College of Library and Information Science, Bhubaneswar, as distinguished library professional. Dr. Nilakantha Sarangi sir, retired Chief Librarian, Parija Library, Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. He has joined the Utkal University Library as a technical assistant in 1962, and through his dedicated and distinguished service rose the position of the Chief Librarian of Utkal University. He retired from the service in 2001 after nearly 4 decades of professional contribution to the university library system. Dr. Sarangi maintained a close and cordial association with Dr. Hare Krishna Mahatab, the architect of modern Odisha. One of the Dr. Sarangi's most notable contribution was his pioneering role in establishing Library Science College in Bhubaneswar in the name of Pandit Nilakantha Das. Under the banner of Pandit Nilakantha Das College of Library and Information Science, affiliated to Utkal University, he initiated a certificate course in library science in 1978 and subsequently introduced the bachelor's degree and Library of Information Science and also MLib and information science. These initiatives provided an important foundation for professional library education in Odisha and helped to create trained manpower for libraries and information centers across the state. Please join me with a big round of applause for the sir. Dr. Sarangi has written a book and it is now released. नहीं मैडम मैडम
ସେ ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଉପରକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ତ ରହିବା ସେମାନେ ସାର୍ ବା ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଖ 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 ସେ ଆସିବେ ଦେଖିଲ ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ କରିବାଟା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଏମାନେ ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ହଁ ଏଇ ସସ୍ମିତା ଲେଡି ସେଇ ପଛପଟେ ଦେଖ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପଛପଟେ ମାନସୀ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଛପଟେ ଟିକେ ରହିଥାଅ ଟିକେ ରୁହ ହଁ ଆସିବେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଆସିଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଆସିବେ I would request the dignitaries please come up on the dais. I would request the dignitaries please come up on the dais. Now I request to come up on the dais Mrs. Sashmita Mishra, retired librarian, Hare Krishna Mahatab State Library, as a life member of Odisha Library Academy. Please welcome her.
Thank you, madam. Librarians are the bridge between the past and future, ensuring that knowledge, information is accessible to all. I request the dignitaries. So there are few professionals amongst in Odisha Library Academy who has helped us and they have helped our profession to grow. So we want to recognize their effort. It was a pride moment for all of us. I need all your cheers, all your applause for them. I request Bedrata madam to come forward and receive a token of appreciation from our Odisha Library Academy. She has a pioneer in bringing all our profession together, and she has helped us to grow this profession immensely. We are proudly announcing and we are proudly applaud her with, a round of applause for her. When she was taking a proud moment, we can show our love and affection for her from our Odisha Library Academy. It's just a token of appreciation, but it's an encouragement for all of us to take right a moment for our library professions. Yeah. Next, I would like to ask Niranjan Mahapatra. He is our backbone support in bringing all our education system, all our whatever learnings we are doing. A round of applause for him because he has helped a lot for organizing lot of seminar, and he has also helped us. So I need all your attention and a congratulatory message for all of us from our Odisha Library Academy. Thank you, Niranjan, for your support. Now I request Pradeep Chinra to come forward, and it's a great moment for all of us because he has fight a lot for our profession. We need to recognize their effort. It should be recognized by all of us. I request Pradeep to come over and receive a appreciation from us. Thank you. Please join me with giving a big rounds of applause. Thank you, sir. Now I request the President Odisha Library Academy, Dr. Bibhuti Bhushan Sahu sir, to felicitate our chief guest and guest of honor with a small token of appreciation. A huge round of applause. Thank you, sir. Now I request the President of Odisha Library Academy to felicitate our guest of honor with a small token of appreciation. Once again, I request Sri Bijay Ketan Panda sir, Secretary Odisha Library Academy, to felicitate our organizing secretary, Dr. Pushpalata Negi madam, for her contribution towards 11th annual convention and seminar of Odisha Library Academy.
I request Sri Bijay Ketan Panda sir to felicitate our organizing secretary Dr. Pushpalata Negi madam for her contribution towards 11th annual convention and seminar of Odisha Library Academy. Thank you so much, sir. Now I would call upon the stage Now I would like to call upon Dr. Pushpalata Negi, Librarian, RIE Bhubaneswar, Organizing Secretary, to deliver the vote of thanks. Respected Chief Guest, Shri Kali Prasanna Mahapatra Sir, IAS and Director Higher Education, Government of Odisha, respected Guest of Honor, Professor Mansi Goswami, Principal Regional Institute of Education, Bhubaneswar, respected Keynote Speaker, Dr. Bhubaneswar Sahu Sir, President, Odisha Library Academy, Dr. Vibhuti Bhushan Sahu, Secretary, Odisha Library Academy, Dr. Bijay Ketan Panda, invited speakers, distinguished guests, and all librarians and library professionals. Welcome each and everyone. Namaskar. It is my privilege and honor to propose vote of thanks at the conclusion of this inaugural session. On behalf of the Odisha Library Academy and Regional Institute of Education, Bhubaneswar, I express my hearty gratitude to our respected chief guest and guest of honor for graciously accepting our invitation and sparing their valuable time to be with us, to guide us, inspire us with their enlightened words. Thank you, sir, and thank you, madam. I express my gratitude to keynote speaker for his insightful speech. Thank you, sir. I extend my heartfelt thanks to our respected President and Secretary of the Odisha Library Academy for addressing this gathering and their sincere efforts and dedicated leadership in organizing the 11th Annual Convention and National Librarians Day. Thank you very much, sir. I also sincerely thank all the invited speakers and distinguished guests, distinguished dignitaries for accepting our invitation and sparing their valuable time with us. Their insightful contributions and fruitful discussions will definitely enrich and enlighten the members of the Odisha Library Academy and other library professionals present over here. My sincere thanks also go to all the office bearers and members of the organizing committee for their dedicated efforts, meticulous planning, and effective contribution in making this event successful. I would also like to express my sincere appreciation to the media persons and ICT team for their valuable support and for helping us document and cover this event. My special thanks to the authorities of this institute for extending their valuable support, cooperation, and for providing us with the facilities to organize this event successfully. My thanks also go to both our anchors for their nice organization of this session, and thanks to the student volunteers for RIE for their kind cooperation. Finally, I extend my sincere thanks to all the members and participants of this program
for sparing their valuable time, and for making the gathering meaningful and purposeful. Let us continue to work together towards the professional development of librarianship and the growth and strengthening of library services in Odisha and in our country. Once again, I thank you all for your gracious presence and valuable support. Thank you. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, madam. Now, all are requested to come forward for a group photo session. Outside. Outside the auditorium, it will be there. Here it will be. Please be here. I request all of you, please come forward for a group photograph on the podium. Those who can come and we can have a group photograph here, please. So some of them can sit, some of them can stand, some of them, so that it will finish it up. Thank you. So we can say stand like this. So we'll stand there in front of you and we take the photogram from this side to that side. Okay. Okay, sir. Our Navy. थोड़ा विक्ट्री करो बढ़िया 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 एक लास्ट फोटो यस सर थैंक यू सर